Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is World Personalities. Here are some famous people of the modern era. Write their names, choose from the box. First, an English naturalist, he studied why and how some forms of life survive while others die out. He reached the conclusion that the survival or extinction of an organism depends on its ability to adapt to the environment in which it lives. He published his findings in the books on the origin of spices by means of natural selections in 1859. बच्चों इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने अपनी स्टडी के बारे में बताया था, जो स्टडी इन्होंने की थी लाइफ की फॉर्म्स के बारे में. ठीक है, इनका नाम है बच्चों चार्ल्स डार्विन. सेकंड, an Irish playwright, he wrote on the prevailing social issues. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. इनका नाम था बच्चों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. Third, a famous scientist, she discovered the elements polonium and radium. She was awarded the Nobel Prize twice in 1903 in physics and in 1911 in chemistry. बच्चों ये एक फेमस साइंटिस्ट हैं और इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, एक बार फिजिक्स के लिए एंड एक बार केमिस्ट्री के लिए. इनका नाम है बच्चों मैरी क्यूरी. फोर्थ, नोन एज द लेडी विद द लैम्प, शी सर्व्ड ड्यूरिंग द Crimean War. She is considered the founder of the nursing profession. इनका नाम है बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल. Fifth, a Scottish inventor, he improved the design of the steam engine. He designed an engine that was more powerful and used much less fuel. The unit of power is named after him. डैश. बच्चों ये एक स्कॉटिश इन्वेंटर है, ठीक है, और इन्होंने स्टीम इंजन के डिज़ाइन को क्या किया था, इम्प्रूव किया था, और एक इंजन स्टीम इंजन का नाम इनके नाम पे भी रखा है. इनका नाम है जेम्स वॉट. Sixth, a Romanian gymnast, she won 5 gold medals in 2 successive Olympics. इनका नाम है बच्चों नाडिया कोमननाई. Now seventh, an American industrialist, he developed the Model T car. He also popularized the assembly line method of production. इनका नाम है बच्चों हेनरी फोर्ड. Eighth, she was the founder of the Missionaries of Charity in Calcutta. She won the Nobel Peace Prize and the Bharat Ratna for her efforts to improve the condition of the poor, the sick and the orphaned. बच्चों ये जो थी कोलकाता में एक मिशन चलाती थी, ठीक है, मतलब एक चैरिटी होम ये चलाती थी जहाँ पे ये पुअर लोगों को, ऑर्फन लोगों की क्या करती थी, मदद करती थी, उनकी सेवा करती थी. इनका नाम है बच्चों सेंट मदर टेरेसा. नाइन्थ, the ruler of France from 1804 to 1815. He was defeated at the Battle of Waterloo. इनका नाम था बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट. Now 10th, he is a famous scientist. He could not move, write or speak since his childhood. Sitting on his wheelchair, he makes his brain work. बच्चों इनका क्लू पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे. इनका नाम है बच्चों डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग. तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.